everyone, Sat Sri Akal. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great and staying safe and sound. मैं बहुत शॉपिंग कर ली है ब्लैक फ्राइडे दी इन कैनेडा ते मेरा एक्सपीरियंस मैं सोचा मैं ताड़े सारे नाल शेयर करा और जिन्ने भी पंजाबी ये देख रहे हैं या जिन्ने भी शौकीन लोग हैं शॉपिंग दे ओनली ब्लैक फ्राइडे सेल इज समथिंग विच इज very close to their hearts because ये टाइम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत अच्छिया डील्स मिलती हैं कैनेडा दे विच ते क्योंकि असी बीइंग अ पंजाबी वेरी शौकीन ऑफ बाइंग ब्रांड्स मैनू एक दिलजीत दा याद आ रही है वीडियो जिहदे च उन्होंने कहा सी दैट पंजाबियों को सिर्फ ब्रांड ते कपड़े ही होंगे हैं बैंक बैलेंस नहीं होंगे सो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पंजाबीज एंड बट दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट सेव बट ब्लैक फ्राइडे सेल दे उत्ते इट इज ऑल वर्थ इट Black Friday sale basically starts somewhere in first week of November and goes up till December until the stock last. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਲੇਟ ਫॉर एग्जांपल ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ everybody is after shopping during Black Friday. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ definitely call your relative right now ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ this is the best time to get all the brands that you can dream of and every brand ਚਾਹੇ ਉਹ semi luxury ਹੋਏ luxury ਹੋਏ appliances ਹੋਣ electronics ਹੋਏ kitchen ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਏ your crockery ਕੱਪੜੇ shoes bags everything is on sale for that matter there are amazing deals on your phones gizmos and everything without wasting any time let's see मैं की shopping कीती है मैं ताड़े सारे नाल शेयर करना चाहती सी कि मैं की begin with my shopping. If you can see I got these shoes from Aldo India actually is reasonably expensive I would say but मैं Aldo तो ये shoes pick कीते I picked up these shoes I think for $50 oops sorry yes I picked up these shoes for $50 and जो कि is normally priced around $89-90 but मैनू half price दे उत्ते अपना ये ballerina मिलिया which I think is worth the price. Moving on, my husband is really crazy for buying perfumes and he has like n number of perfume bottles. This is the good time to buy perfumes and holiday gift sets. मेरे husband ने a bottle लिती है Hugo Boss थी. This is normally this bottle normally cost you around $150 but then during your holiday season sale जड़ी की हुन चल रही है ये मेरे husband नु पिया है $110 दा and along with it because there are so many deals going on he got this shaving cream as it's not a shaving cream I'm sorry it's a shower gel as complimentary along with the perfume. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ deals ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ there are many holiday sets that you can buy. Hudson Bay is one of the places in Canada ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ holiday sets ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ price ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ like last time we bought Versace set we bought Dior set they are all in the range of $120 to $150 और normal times ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ bottle ਤੁਹਾਨੂੰ normally ਹੀ $150 ਜਾਂ $200 ਦੀ
पेगी. So this is a very good deal. Hun I will talk about one of my favorite product these days, which is Kerastase. This is Kerastase in India is also very expensive. In Canada is also one of the premium brands when it comes to hair care. ते Kerastase ਦੇ products are basically professional range है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ normally Kerastase ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, you can see this is 3 pieces set. It has my shampoo, it has my conditioner and my after leave-on serum in it. ਤੇ अगर मैं एक प्रोडक्ट की गल करा तो एक ही कला ही $50 का आंदा है तो $50 to $60 का इट इज़ अराउंड $160-170 इफ आई टेक ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स. लेकिन मनु ए क्रिसमस, बिकॉज इफ यू कैन सी द पैकिंग ऑल्सो, इट इज़ अ क्रिसमस सेट, क्रिसमस हॉलीडे सेट. तो मनु ए प्या है $107 का. आई जस्ट पेड $107 प्लस टैक्सेस ऑन इट. तो मनु 115-120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੈਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $160-170 ਦਾ ਪੈਂਦਾ normally, but during the Christmas and during Black Friday sale I got a deal with this. and ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ hair problems ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ hair ਬਹੁਤ brittle ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ roughness ਤੇ ਕਾਫੀ frizziness ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ definitely try this. You are not going to be disappointed. मैं इस time पे you can see my hair is not at all blow dried, nothing, and this is my natural hair after using this shampoo. So I highly recommend this to any of you to buy it. Moving on, I will move on to something which was my big buy in Black Friday this time, is my Burberry jacket. This was basically a gift from my husband this time because Black Friday बड़े अच्छे time पे आंदा है इस हर साल, because मेरा बर्थडे नवंबर एंड च आंदा है तो उदो ब्लैक फ्राइडे डील्स लग चुकियां होंदी हैं. सो आई एम वेरी लकी. मेरे बर्थडे तो पहला तो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स की शॉपिंग शुरू हो जाती है, इस करके वी कीप शॉपिंग सो मच. मैं पिछले 3 हफ्ते तो हर वीकेंड हॉल्टन हिल्स टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स जा रही हैं शॉपिंग करने ली. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि तुसी सारे, आई एम श्योर जेडे भी वीडियो देख रहे होंगे जितने भी ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, they should definitely go shopping to this mall which is Toronto Premium Outlets in Halton Hills. ਤੇ मैं थल्ले अपनी डिस्क्रिप्शन च उस जगह का एड्रैस पा दांगी तो तुसी डेफिनेटली सेव करो अपने पैसे नू इस दिन ली, because you will get everything on good discounts. So talking about luxury brands, I got my jacket from Burberry last week. Let me just show you. So this jacket is normally priced around $2,000. I'm talking about Canadian dollars here. $2,000 to $2,200 without taxes. So this is like a down jacket. मेरा अगर तुसी पिछला वीडियो देखा होएगा, I have spoken about winter jackets in Canada. So it is extremely warm for Canadian weather. The jacket is really light because it has down in it, and it is it's a black long jacket that I got. A lagi hui si $1,900, I think $1,900 या $2,000 the jacket that the price see, but you will be shocked to know that I got this for what price. I got this jacket for $1,100 plus taxes. Yes, this is the price of this jacket that I got this for. I think it is a steal deal. A sirf ब्लैक फ्राइडे के टाइम ते तुहानू एहो जिहियां डील्स मिलणगियां. नॉर्मली लग्जरी ब्रांड्स के उत्ते 10 to 20% सेल ही लगी होंदी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बर्बरी या इफ आई टॉक अबाउट पराडा, गुची, तुहानू अगर तुहाडा 2000 का बैग है तो वो तो तुहानू मे बी 20% ऑफ मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज अमाउंट because already they are expensive bags. तो अगर तुहानू 20% ऑफ में मिल जाए, that's a lot of saving that you do. That's the reason I'm recommending you Toronto Premium Outlet, because इत्थे सारे luxury brands हैं, सारे semi luxury brands हैं. You will find mid segment brands as well, like Coach, Tommy, CK, DKNY, all of them are available. ते अगर मैं बर्बरी की गल करा तो बर्बरी ते
कुछ आइटम्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ 40% 30% ਆਫ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਆਫ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20% ਤੇ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਲੀ ਔਨ ਬੈਗਸ they had very good discount, and on new collection that was the good thing। ਜਿਹੜਾ Burberry ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਹੈ TB, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ around 30 to 40% discount ਲੱਗਾ ਸੀ, which I think for a luxury brand is huge। That's the reason in this mall there are always huge lineups, and during Black Friday they have quite good deals। अगर मैं गल करा फारेगामो दी, फारेगामो ते otherwise usually बिल्कुल भी डिस्काउंट्स नहीं होंगे। इट इज़ द लेटेस्ट स्टोर विच इज़ ओपनड इन टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स, ते उत्थे इस टाइम ते 20% ऑफ लगा है इस मंडे तो। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ $800 ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਆਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ until the stock lasts। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੀਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸ਼ਾਪੋਹੋਲਿਕ ਲਾਈਕ ਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ what I'm talking about। ਤੇ ਹੈਡ ਟੂਵਰਡਸ ਬਰਬਰੀ, ਹੈਡ ਟੂਵਰਡਸ ਗੁੱਚੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਡੀਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਸਟਫ ਐਟ half a price। Many things also even I would say more than half a price। बहुत जिਵੇਂ कोच हो गया, माइकल कॉर्स हो गया, ਉਹਨਾਂ ਤੇ up to 70% off ਲੱਗਾ ਹੈ on bags, and you won't believe on Black Friday they had up to 70% on bags plus additional 30% on some products। So you can imagine कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8,000 ਜਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Okay, so this is another jacket that we got। This is the jacket that we got just around Black Friday। This is basically my husband's jacket that we got। मैं jackets ਦੇ ਉੱਤੇ winter jackets of Canada मैं specially एक video बनावांगी, because I have now got experience of staying in this country from past 1.5 years। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ jackets ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ jacket ਕਿੰਨੀ warm ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ weather 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ jacket ਕਿਹੜੀ jacket best ਹੈ। So I would rate this jacket as the best buy so far of us, considering because मेरे कोल rucksack है, मेरे husband कोल North Face है पहला, Moose Knuckle है, and then we have now got Burberry, and we have mid segment brands also like DKNY and CK as well, and this one now to adding to our edition is Macaj। ये जो मैं brands से नाम ले रही हूँ इंडिया च नहीं मिलेंगे, because these brands are specifically for jackets, extreme weather condition लिए jackets वाले brands हैगे हैं ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ हैं, and ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ jackets ਦੀ range ਹੋਏਗੀ around $1,000 to $1,500 तक जाती है। Even there are few jackets that go up to $1,700 to $1,800 too। ते अगर मैं इस jacket की गल करा, if I am not wrong, this jacket is around including taxes would be around $1,300 to $1,400। लेकिन मेरे husband ਨੂੰ ਇੱਥੇ steal deal ਮਿਲ ਗਈ because store ਦੇ ਉੱਤੇ up to 40% off ਲੱਗਾ ਸੀ, and my husband got this for $900 plus। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਇਨਫ, ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, buy a Macaj। This is like an investment forever। You would not regret। मेरे husband ਨੂੰ टी-शर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं and he actually feels warm, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ sweating ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This jacket is doing so much of justice। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਨੇ ਹੈ and this jacket is going to last with you forever। So I think again a steal deal that we got on this jacket। Now we will move on to shoes। So Nike, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ I don't know ਬਹੁਤ craze ਹੈ Nike ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, Vaughan Mills ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ Halton Hills ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ small ਚਲੇ ਜਾਓ, Nike has 2 to 3 hour waiting lineup। I don't know why
if people in Canada are crazy for Nike. So I got 2 pair of shoes, again a gift from my husband for my birthday. मैं अपने birthday पे सारी shopping अपने husband तो कराई है. So yes, so this is one pair of shoe that I got. Normally this is for, okay, normally this shoe is for $160 plus taxes in Canada. It is Canadian dollars, so this is one shoe that I got. This was for $160 plus taxes, but I got this for $90 plus taxes. So मैं एक ते price च 2 Nike दे shoes लेके आई हाँ. Let me show you the second pair. Okay. So this is the second pair that I have got. This was for, again, $150, and again I have got this for around same price, $90. ਤਾਂ मैं जो 2 shoes, एक shoe लेके आना सी, ਉਹ एक shoe the price ਦੇ which I have got 2 shoes. So you can look at this. This is such a smart shoe that I got from Nike. And so all you people who want to buy your sports shoes, this is the time to go and pick your shoes, because again बहुत अच्छियां sales लगियां हैं. Let me now move on to another shoe that I got from Steve Madden. Steve Madden, although all of these had 50% flat off, so any shoe that was costing you around $150 or $100 or $90 is come down to $40 to $50. India at Steve Madden ਦਾ ਇੱਕ shoe as far as I know ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ was for 5,000 rupees, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ $100. ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ shoes ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. So ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ to get stuff for you. Okay, moving on to my favorite shopping. Last year भी मैं ਜਦੋਂ Black Friday sale ਲੱਗੀ ਸੀ, I was shocked to see कि skin care ਦੇ products ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ sale ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. There are so many holiday sets that are available. Giving you an example, I got this MAC holiday set. This is like they put their sets up for Christmas and Black Friday. These are 3 full-size lipsticks. If I show you, so this is a full-size lipstick that you can see, and एक lipstick India ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 rupees ਦੀ ਹੈ, if I am not wrong. Yes, it's 1500 ਦੀ lipstick है India ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 3 lipsticks I have got it for $45, like after taxes, around $40 to $45 ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 3 lipsticks ਪਈਆਂ हैं. So you can imagine that how cost effective. चाहे मैं शॉपिंग ज़्यादा कीती है, बट मैं बहुत समझदारी वाली शॉपिंग कीती है, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू लास्ट मी एट लीस्ट फॉर क्वाइट गुड टाइम, फॉर क्वाइट सम गुड टाइम. ओके, हुण मैं तुहानूं एक आइटम्स दिखावांगी. क्लिनिक इज़ वन ऑफ द प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट across the globe. India the which it is quite expensive, even if you go for buying their any cream also, that costs around 3,000 to 4,000 rupees. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਏਗਾ ਅਰਾਊਂਡ $70 to $80. ਲੇਕਿਨ just because it was Black Friday deals, I have got this one set. This is one set that I got for myself. Then there are a lot of things inside this. I have got one. Then I have got, these are my free gifts that I got along with this set. I have got my makeup remover. How much stuff I've shown you.
all of this is I think $120. This is for $120. वैसे ये शायद मैनू सेट बहुत महंगा पैंदा, ऑब्वियसली अगर मैं इंडिविजुअली लेंदी था दिस वुड हैव क्रॉस्ड। ये जो पूरा बॉक्स है एक्सक्लूडिंग दिस, नॉर्मली ਇਹਦਾ प्राइस पूरे बॉक्स का $300 ਦਾ समान है ਇਹਦੇ अंदर, बट ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ समान ਪਿਆ है around $120 ਦਾ। so this is like and this individual cream is for $40 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ $40 ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। so you can imagine the kind of savings that one can do if you shop during this time. Moving on to my another shoe collection. This is something that I got from Coach. I love winter boots and I have fetish for collecting shoes. So this is another pair of shoes that I have got. This is my pair of Coach shoes that I have got, and I love boots. I love winter boots, and so I have fetish for them. So I really like them. Hun dekho ye jada price si e shoes da, this was around $400 plus taxes, to be precise $376 plus taxes is the price si, but munnu ye shoes paye hain around $250 de, which is like a steal deal again. So Coach and Michael Kors the shoes बहुत अच्छे हैं. I really like their collection. I really like their designs and they are really good, comfortable. मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी सारे boots था जड़े में लेते हैं, talking about the boots every day, which I'm sure I'm not going to wear a $300 to $400 shoe on when I'm going out for walks or going for buying grocery. इस करके मैं तानू सारे नु एक ब्रांड रेकमेंड करांगी. कैनेडा दे विच जेडे भी सारे लोग हैगे हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैगे हैं जिन्हां नु अजे समझ नहीं आ रहा वो कित्थों शूज़ खरीदन, मैं तानू एक ब्रांड रेकमेंड करांगी या एक स्टोर रेकमेंड करांगी जिहदा नाम है Ardene. So you definitely need to get shoes from Ardene for your daily wear. I'm sure अगर तुसी किते पार्टी वगैरह जा रहे हो तुसी you would prefer wearing other brands, but if you are brand conscious, otherwise I vouch for these shoes. मैं पिछले साल एक पेयर ए shoes दा लिता सी, they are around $15 to $20 per pair. Yes, $15 to $20 दा एक पेयर है, but they are water resistant, which means they are almost waterproof. They are anti-skid and they have proper fleece inside them, so they are extremely warm. And ek season aram naal mere pichle wale shoes ne kadya hai. I walk in them, I go for my groceries, whenever it's snowing. These are the shoes for me whenever I have to step out for my regular stuff, for my routine work. ये मैं shoes क्योंकि मैं member हाँ Ardene, so I got these shoes for $12 per shoe, so I got 2 of them. So this is like मेरे दोनों shoes जड़े हैं they just costed me like $24. So and they are very good. एक season पाओ rose पाओ इन्हां नू ते, and you know after one season you can just buy the next pair and it does not hurts you because there is तो से तो कोई actually पैसे लगाए ही नहीं. Moving on, let's move to clothing. What all I shopped for my clothing. Tommy is one of my I really like Tommy clothes for my everyday wear क्योंकि Tommy दे कपड़ियां दे विच एक अलग जी finesse है. The colors are super bright, very nice, and they are up to date when it comes to with styling. So I really like Tommy clothes. Tommy दे उत्ते 40% flat off सी सारे products दे उत्ते, everything was on 40% off. ते पहला असी पहले 2 हफ्ते गए तो सानू 40% ऑफ मिलिया. हुण असी दोबारा शॉपिंग करन गए तो सानू उस दिन ही सेल लगी हुई सी 40% प्लस 30% एडिशनल. तो तुसीं सोच सकते हो कि असी दोबारा तो होर शॉपिंग कर ली. आई थिंक असी $150 दे विच मैं मेरे हस्बैंड दियां टी-शर्ट्स, sweatshirts, what not, we got this lower, we got t-shirts, we got sweatshirts, there is a lot of stuff that we got like lots and lots of t-shirts. So we shopped quite a lot from Tommy. So and I also will suggest you कि तुसी जिवें summer दियां t-shirts हैं, for example this is my summer t-shirts that I got from Tommy. Summer दा सामान अगर तुसी इस टाइम ते लोगे Black Friday टाइम ते, it is going to be extremely cheap because everybody is running after winter wear, but तुसी summer दा सामान लोगे normally
This t-shirt costs around $50 plus taxes, but munnu a t-shirt I think by yes $20 di, that's about it. Is to because I think 40% plus 30% additional is what I got on them. I have got loads and loads of clothes from Tommy, so there are lots of sweatshirts that I have got. I love these sweatshirts. Normally a sweatshirt that it costs you around $115 to $120 in Canada, but then during your sale everything of this is on $40. मेरे ख्याल में 80 maximum 2-3 I think so $300 spend किया है, and we have got like lots and lots of stuff. So that's about it. That's all I have shopped for my birthday, for Black Friday, and hunta boxing sale bhi aan wali hai, which is another exciting time for everybody in Canada because and US as well, because इस time पे भी बहुत sales लगेंगियाँ, appliances, everything they're going to be huge sale. So but then मेरा साल का कोटा पूरा हो चुका है, and if you like my video please don't forget to subscribe to my channel. मेरे वीडियो ਨੂੰ like करो, share करो, मुन्नू please comment sections दसो मैं किस हो topics ਦੇ ਉੱਤੇ video बनावाਂ. If you want to see more of my day to day life ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ. I'll be more than happy to put my videos on. And thank you so much each one of you for loving my dance videos. Mera Born to Shine video is almost touching 500,000 views, which is all because of you guys. Please make my channel grow, please make our family grow bigger. मैनू फटाफट बहुत सारे subscribers दो ताकि मैं और अच्छा content बनावा. And my next video hopefully is going to be on winter jackets. अगर तुसी उत्ते देखना चाहते हो video तो please comment section दसना ना भूलना. Stay safe everybody, lots of love, lots of blessings coming your way. Merry Christmas, and wishing you all a very happy new year. I will be making more videos, but till that time stay blessed and thank you.